Guys, we have with us our captain, Mr. Rohit Sharma, to address this pre-match press conference. We'll take one question at a time. Please put your phones on silent. Who wants to go first? हाय रोहित, काफ़ी अच्छा चल रहा है वर्ल्ड कप हमारे लिए, काफ़ी लगातार मुकाबले जीते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि वो एनसीए से निकल चुके हैं, तो क्या अपडेट है? क्या वो मैच फिटनेस के करीब हैं? कब तक टीम ज्वाइन करेंगे? कब अगला मुकाबला खेलेंगे? नहीं, देखिए काफ़ी पॉजिटिव उनका रिएक्ट तो नहीं बोल सकता हूँ, बट जो भी प्रोसीजर इंजरी के बाद जो भी करना पड़ा उनको और एनसीए को, काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई है वहाँ पर. अभी फ़िलहाल ये कल के मैच के लिए तो अवेलेबल है नहीं, बट वो ऐसी इंजरी है जो हमें एवरी डे देखना पड़ रहा है कि कितने % फिट हुए, कितनी रिकवरी हुई है, कितनी बॉलिंग डाली है, कितनी बैटिंग की है. तो वो डे टू डे बेसिस पे हम उनका वो कॉल लेना चाहेंगे, क्योंकि हम वर्ल्ड कप के लिए देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैचेस 3-3, 4-4 दिन में हो रही है, तो एवरी डे वाला जो सिचुएशन होता है वो हम देख रहे हैं. तो हो सकता है जैसा उनका चल रहा है, हो सकता है होपफुली जल्द से जल्द देखने का मौका मिलेगा. इतना ही बोल सकता हूँ अभी तो. Rohit, hi. I just wanted to ask you, you spoke about the pollution in Mumbai. Do you think that is a cause of concern? And also, do you think the Maidan culture that is there in Mumbai, future generations could be affected by that? Because it is prevalent in Mumbai as well as Delhi. I mean, in an ideal world, you don't want a situation like this, but I'm pretty sure the concerned people are taking the necessary steps to avoid these kind of situation. It's not ideal, everyone knows that. But obviously, looking at our future generation, your kids, my kid, obviously it's quite important that they get to live without any fear. So yeah, I mean, every time I get to speak outside of cricket, if we are not discussing cricket, I always talk about this, that, we have to look after our future generation. You have beaten Sri Lanka recently in Asia Cup, and also, but the fact that in 2011 they were once the world champions in this zone, no, not world champion, they were in the final. So how much of those past and all the things matter to you in this kind of a match? Yeah, no, look, I think, in this World Cup we've seen a lot of games, a lot of, I wouldn't call it an upset, because every team here is to win games, so it's not an upset. But every team is trying to beat the other team. So at no point or no game you can think that, this is a cakewalk for us. It's important that you stay in the present, do your processes, keep working as a team, what you've been doing as a team. Focus on all those aspects, and as a team, that is what we are trying to do. We are not trying to look too much into the opposition. We're trying to internally look into ourselves and see where we can get better as a team, better as a player, certain areas that we want to work on. Yes, we've won 6 games, but there have been a lot of games where, we didn't had a perfect game, and you cannot have a perfect game, but near perfect game is what you want as a team. So those are the things that we try and look into. And speaking of the past, obviously, there's hardly 1 or 2 players from their squad, from that team, maybe one guy, Angelo. And same from our side as well. There's only 2 guys in the squad. So I don't think, it's been more than a decade now since that has happened. So I don't think that is going to be a factor. Every day, you have to turn up, and you have to turn up well, thinking that this is a fresh day, fresh game, fresh opposition. Hi Rohit, आपकी सेल्फलेस अप्रोच की बहुत तारीफ हो रही है इस वर्ल्ड कप में. 50, 100 माइलस्टोन कुछ भी नहीं देख रहे हो, खाली शॉट मारने को देख रहे हो. अच्छा, तो पावर प्ले में आपके रन भी सबसे ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट भी कमाल की है सबसे अमंग ऑल ओपनर्स. तो कुछ सजेशन आपके लिए ऐसे आए हैं फॉर्मर क्रिकेटर्स के कि थोड़ा सा सेल्फिश हो जाएंगे टीम के लिए तो अच्छा रहेगा, टिकेंगे थोड़ी.
I'm enjoying my batting. So, but obviously keeping the situation of the team in mind, it's not like कि मेरे को जाके सिर्फ बैट घुमाना है वहाँ पर. अच्छे तरीके से घुमाना है, अच्छे तरीके से खेलना है और अच्छे सिचुएशन में लाके रखना है टीम को. ये मेरा माइंडसेट है. जब ओपन करता हूँ तो देयर इज द स्कोर बोर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. सो देयर इज एज अ बैट्समैन आई हैव टू थिंक, आई हैव टू सेट द टोन फॉर द गेम. तो मेरे पास वो एक एडवांटेज या यू कैन कॉल इट एक फ़ायदा है कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बैटिंग एंड विकेट का प्रेशर नहीं है क्योंकि 0-0 है सब कुछ. तो you have to start like when you have to start like that, you can be fearless and you can play the way you want to play. But then last game we were put under pressure a little bit in the power play. 3 विकेट गिर गए थे हमारे. तो गेम चेंज करने के लिए भी आना चाहिए. तो आई थिंक एज अ बैट्समैन मेरा फोकस इस चीज़ पे रहता है कि टीम को उस टाइम पे क्या ज़रूरत है, पहले ओवर में क्या ज़रूरत है, 5वें ओवर में क्या ज़रूरत है, 10वें ओवर में क्या ज़रूरत है, टीम का स्कोर क्या है, कितने रन चेस कर रहे हैं, कितना स्कोर इस ग्राउंड पे अच्छा है. ये सब चीज़ के बारे में मैं सोचता हूँ जब मैं बैटिंग करता हूँ. तो जो भी सिचुएशन उस टाइम पे डिमांड करती है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो सिचुएशन के हिसाब से खेलने की कोशिश करें. Rohit, are we seeing a different Rohit this World Cup leading by example, and everything is falling in place, and can you describe about your own captaincy? Everything is working well, scoring runs, leading by example, and India winning. Can you talk about that? I'm sorry.